Dear seekers of truth, Premi Sajjano, let's be seated. जहां जहां जिसको जगह मिल रही है बैठ जाएं और अपने सामान का ख्याल रखें. Dear seekers of truth, this is a very rare opportunity for us. It's echoing. Because Satsang is very, very important. It tells us about the truth and the empirical. So many words glorify God. There are many names of God. But there is the empirical, the essence, which is within everybody's breath. Let us take water from the Ganges. Let us take water from the Mekong River. Let us take water from the Mississippi River. Let us take water from the Volga River, Irrawaddy River, from any river. When you examine the water contents, scientifically, when we go into the empirical, we understand that there is hydrogen and there is oxygen. In every molecule of water, there are 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen, and hydrogen and oxygen are 2 empiricals. In the same way, in spirituality, we can have many names of God. But there is the empirical, which is the Logos, which is the Elohim, which is the Akshara Brahma, which is within us. That is why the masters have said that the kingdom of heaven is within you. You don't have to walk. You don't have to run. All you have to do is to go within yourself. And for that, we have to have the knowledge. And the knowledge comes from a spiritual teacher. Once I was asked a question, why do we need a guru? Why guru is important? So I said that I will answer you with a question, asking you a question. And the question is, why do we need GPS? Global Positioning System. When the army marches, when the plane flies, when we drive our cars, we always rely on GPS. In the same way, in spirituality, we rely on Guru Positioning System, GPS. The Guru gives the knowledge. That is for example, the Wi-Fi is everywhere, but you have to have the code word to connect to the Wi-Fi. In the same way, for example, the radio station transmits the radio waves. The radio waves are everywhere, the television waves are everywhere, but we can't hear, we can't see. And the reason for that is that we don't have a radio, we don't have a
a receiver to receive the television waves. In the same way, God is also omnipresent, omnipotent, omniscient. He is everywhere. There's a beautiful analogy given by Ghalib. Ghalib was drinking in a mosque, and somebody said that you are drinking in the house of God. Don't you understand that God is here? So Ghalib said, इस जाहिल शराब पीने दे मुझे मस्जिद में बैठ कर या और कोई जगह बता दे जहां खुदा ना हो. He said, oh man, let me sit here and drink. Otherwise tell me a place where there is no God. There is no place on earth where there is no God, because God is omniscient, omnipotent, omnipresent. So the basic thing is we don't understand the power of the Almighty. And that is why the scriptures have said that the kingdom of heaven is within you. We have to go within ourselves. And for that, a spiritual teacher, I always give the analogy that to learn mathematics, you have to go to a maths teacher. To learn English, we have to go to an English teacher. To learn science, we go to a science teacher. In the same way, to learn spirituality, we go to a spiritual teacher. The spiritual teacher unravels. That is why we have all the masters. Lord Buddha, Christ, Moses, Krishna, Lord Rama, all the saints have come to bestow knowledge on humanity. They have been giving knowledge to people. Because knowledge is live, it is not a dead thing. For example, in Buddhism, they have the mantra Om Mani Padme Hung. Om is a very pious word. It is the unification of Akar, Ukar and Makar. Mani is something that glows in the darkness. It is self-effulgent. Padme Hung is the end of the mantra. It's a very pious mantra that talks about the money that glows in darkness. It talks about the light which is self-effulgent, and that is why the scriptures say God is light and in him there is no darkness. If thine eye be single, thy body shall be full of light. When Moses goes to Jehovah, he was begging that I want to see you. So Jehovah said, you cannot see me with these physical eyes. But when Moses was persistent, he experienced a burning bush. The light was emanating from the bush, and Moses had the experience of God in form of light, divine light. Our scriptures also talk about the same thing. All the scriptures talk about, for example, we put a bindi, the red spot. This is the place of the third eye, tisri aankh. When the third eye opens up, when the eyes become single, the body becomes full of light. That was the true light, that light that every man that cometh into the world. So that light divine shines in every heart, but we have to go within ourselves. And for that, knowledge is very, very important.
we have to make our mind inert. I'll give you one example. When the scientists created electricity, they wanted a bulb to glow in the darkness, to remove the darkness. So they made a filament. They passed the electricity through the filament. The filament got red hot and it burned. It burned because there was oxygen in the air, and oxygen burns. So they said, finally, okay, we should remove the oxygen. And to remove the oxygen, they made a vacuum bulb. And you know it is very difficult for a vacuum bulb to be kept because it breaks. But when they made a vacuum bulb, they took out all the air from the bulb, they passed the electricity, and the filament became red hot. But there was no oxygen. So oxygen could not burn it. So the filament started giving light. Then they said, how can we perfect the bulb? Because it breaks. It's very delicate. So they thought about inert gases. The gases that don't burn. So they took neon gas, argon gas, krypton gas. They put them in the bulb. But the gases did not react. In the same way, when we react with Maya, we burn up. But when the mind becomes inert, when the mind becomes contented, when the mind doesn't mingle with the worldly thoughts, it becomes pure. Then you have the saying in your heart, blessed are those pure in their hearts, for they shall see God. They will have the experience of the divinity. So, all the scriptures talk about a reality. All the scriptures talk about energy. Einstein talked about a formula, E equals to mc squared, where he talks about that E is energy, the mass is a conversion of energy. And that is why the science says, the law of conservation of energy, that energy can neither be created nor it can be destroyed. In Bhagavad Gita, Lord Krishna talks about Nanam chindati sastrani, Nanam dahati pavaka, Na chanam kaledanti tapo, Na shoshati maruta. O Arjuna, this spirit is eternal and immortal. Fire cannot burn it. Water cannot dissolve it. Wind cannot carry it. It is beyond destruction. That energy is the source. And that is why when we believe in the Navaratras and we chant and have the ceremony in the Navaratras, we say, Ya Devi Sarvbhuteshu Shakti Rupena Sanstita Namastasai, 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 Namo Namo. O Devi, O Mother, Divine Mother, you are the source of energy. You are the source of creation. You have created this entire universe, because mass, what is mass? Mass is conversion of energy into velocity of light squared. So that is why the scriptures say, in the beginning was the Word. In the beginning means the beginning of what? The beginning of creation. Like even science says, earth has a beginning. World, universe has a beginning. There are stars which are going into black holes. They also have a beginning. Still the light is traveling. It is coming to us. The star is already vanished. Such a vast amount of universe is there. And what is happening in the universe, every particle, what's happening in the particles? There is the center, there is the nucleus, there is the proton, neutron and electron. Electrons are revolving around the neutron and the nucleus. This vibration is there, and this vibration is called primordial vibration.
I'm speaking many, many words. These words are what's happening. My vocal cords are vibrating, diaphragm is vibrating, the speaker's diaphragm is vibrating, your eardrums are vibrating, and you are listening to my words. So ultimately, if you analyze, all the words are nothing but vibration. The difference between the solid, liquid and gas. You take ice, it is solid. You heat it, it turns into liquid. You heat it further, it turns into steam. And you can go further down and have the ionic state. It can turn into ions, cations and anions. So different stages are nothing but difference of vibration. The ultimate primordial vibration that began everything is within our breath. And Guru Maharaj Ji reveals that knowledge, that is the center point. And through practice, we communicate with it. We have union with it. Union, yoga means union. Yoga comes from yuj root. And yuj means to unite, to be one with. So all the fluctuations of our mind, the vibrations of our mind, they get concentrated and we unite with ourselves. The spiritual experience which the masters talk about, for example, the master was thirsty. He goes to the woman of Samaria. She was taking water from the well and he said, "Give me water to drink." The woman said that you are a Jew, we have nothing to do with you. But the master said that the water that you shall give me, after drinking it, I will thirst again. But the water that I shall give you shall be in you, springing into everlasting life. And that is nectar, Amrit. That is why when we study scriptures, ultimately the foundation, for example, this beautiful hall has a foundation. Every building has a foundation. Every tree has a foundation. So we have to understand the foundation, the empirical, and that is the universal knowledge. It eliminates all the differences. It eliminates all the divisions. And that is why they say, Jaat na poochiye sadhu ki pooch lijiye gyan. Do not ask the caste of a person, ask the knowledge, because knowledge will enlighten you. Siddhartha was a prince. He was enjoying all the luxuries of life. He was a king. Everything was at his disposal. He could order anything and get anything. But he understood that there is misery, there is suffering, and he wanted to get the suffering removed. He wanted to be enlightened. He leaves his palace, he leaves his wife, he leaves his son and goes for the search of enlightenment. And when he becomes enlightened, he becomes Buddha. There's a transformation from Siddhartha to Buddha. Rumi said, Maulana Rumi, he said, I was very clever. I wanted to change the world. But I'm very wise now. I have changed myself. So change yourself, the world will automatically change. The change has to be within you.
The search has to be within you. And the goal is also within you. We don't have to search outside. Just like a musk deer, he goes into the forest, he keeps on searching. But he doesn't understand the source of the musk is right in his stomach, in his belly button. That's why the analogy is given that the source is within us. So we have to have the knowledge and meditate. Constant practice. When we become sick, we go to a doctor. The doctor tells us, okay, you have to take the medicine. Take it, 1 tablet in the morning, 1 tablet in the evening. And we have to take it. If we want to be cured, we have to take the medicine. In the same way, if we want to be cured, we have to practice knowledge. Without the practice of knowledge, we will not transform. The change will not come. You take a cloth, you want to color it. You dip it in the color, take it out, dry it, put it again. And the more you dip it, the color becomes strong and strong and strong. So in the same way, we have to focus our mind. It wanders in the world. Again you concentrate, it wanders in the world. But by constant practice, you keep on practicing, you will perfect it. When we were a child, we used to crawl. Then we took steps and we fell. Now we can walk and run. So practice makes a man perfect. So we have to practice the knowledge. And once we practice the knowledge will make us perfect. So today we have this beautiful opportunity in this hall. And definitely, after seeing the population, so many people coming yesterday, we need a hall. We need a Satsang hall. In Haridwar, we have a very, very big hall and the capacity is 30,000 people. And even that hall becomes small. We have to go outside in Rishikul to have a function. So wherever we go, everything becomes small. Because the knowledge is growing. So today we have this beautiful satsang and we have so many Nepalis and we have the Nepali cap also, which rises up and shows it talks about the mountain and the valley. तो प्रेमी सज्जनों, ये बड़ा सुंदर हमें मौका मिला है और कल जितनी जनता आई तो निश्चित रूप में हमारी संस्था को एक हॉल की आवश्यकता है ताकि हमारे सभी प्रेमी बैठ करके सत्संग सुन सकें, अपने बच्चों को संस्कार दे सकें, अपने बच्चों को प्रेरणा दे सकें और हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो प्रेरणा से आगे बढ़ेंगे। सैन फ्रांसिस्को में एक पेड़ होता है और वो पेड़ संसार का सबसे लंबा और बड़ा पेड़ होता है, पर उसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी जड़ें गहरी नहीं होती हैं। और उसकी जड़ें गहरी नहीं होती हैं फिर भी वो तूफान में खड़ा रहता है, हवा आती है फिर भी खड़ा रहता है, गिरता नहीं है। ऐसा कैसे होता है कि उसकी जड़ें फैल जाती हैं और उसकी जड़ें फैल करके दूसरे पेड़ों की जड़ों के साथ मिल जाती हैं और उनकी जो यूनिटी होती है उन्हें इतना मजबूत कर देती है कि कोई तूफान उन पेड़ों को नहीं गिरा सकता है। तो हमारी ये एक भावना होनी चाहिए कि हम सत्संग हॉल करके ज्ञान का प्रचार करके आध्यात्मिकता से संस्कारों से इतना मजबूत करें कि समन्वय के साथ
सार्वभौमिकता के साथ हमारी संस्था आगे बढ़े। तो इसके लिए सभी प्रेमी संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप में जैसा हॉल ये बना है ऐसा ही हॉल हम भी बनाएंगे। आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हिंदुस्तान से दूर यहां पर अमेरिका में आपको पूरे दिव्य परिवार के दर्शन हो रहे हैं, सत्संग का लाभ मिल रहा है और बहुत से लोग यहां आए हुए हैं जिनके साथ बहुत सा समय हमने बिताया है। यहां पर ठाकुर भाई हैं, सुरेश भाई हैं, ये अभी मान साहब के लड़के, और यहां पर कमलजीत और हमारे एंडी, सभी बहुत से प्रेमी यहां पर हैं। हमेशा हम लोगों ने प्रेरणा दी है अच्छा करो। हम अच्छा करेंगे, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलता है। अच्छा करने का फल अच्छा मिलता है। आपने देखा होगा कि राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा। श्रवण कुमार पानी ले जा रहा था अपने माता पिता के लिए। जब पानी भर रहा था घड़े में तो ऐसी आवाज पैदा हुई कि जैसे कोई जानवर पानी पी रहा है। राजा दशरथ ने तीर कमान निकाला और वो शब्द बेधी बाण मारते थे, बिना देखे हुए आवाज के ऊपर, जहां से ओरिजिनेशन ऑफ साउंड है, जहां से आवाज पैदा हो रही है, वहां पर तीर चलाते थे। तीर चलाया, तीर लग गया श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार क्रंदन करने लगा, रोने लगा। राजा दशरथ ने कहा, मैं तो जानवर को मारा, ये आदमी की आवाज कैसे आ रही है? नजदीक गए तो देखा कि श्रवण कुमार वहां घायल हो गया है और उसको तीर लग गया है। राजा ने माफी मांगी। श्रवण कुमार ने कहा, अब तो मैं मर रहा हूं, ये पानी ले जाओ और मेरे माता पिता को पिला देना, वो प्यासे हैं। बेचारे श्रवण कुमार ने अपनी देह त्याग दी, तो मर गया। राजा दशरथ उस पात्र के अंदर, घड़े के अंदर पानी ले जाते हैं, बिना कुछ कहे माता पिता को पिलाते हैं। माता पिता समझ गए कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा, हमारा श्रवण कुमार कहां है? राजा दशरथ ने सारी व्यथा बताई कि मुझसे अपराध में, गलती में तीर चल गया, श्रवण कुमार मर गया। माता पिता ने पानी पीने से इनकार कर दिया। कहा, जब हमारा श्रवण कुमार नहीं है तो हम पानी पी के क्या करेंगे? और उन्होंने श्राप दिया कि राजा दशरथ, जैसे अपने पुत्र के वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं, ऐसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों का त्याग करोगे। राजा दशरथ को भी प्राण त्याग करना पड़ा भगवान के वियोग में। हे राम, हे राम, हे राम। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। कर्म की बड़ी गहन गति बताई है, गहना कर्मणों गति। हमारे यहां क्रियामान कर्म है, संचित कर्म है और प्रारब्ध कर्म है। जो हमको ये जन्म मिला, हम कहां पैदा हुए, किस वर्ण में पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए, ये प्रारब्ध का फल था। कुछ ऐसे कर्म होते हैं, क्रियामान कर्म, जो हम करते हैं जिसका तत्काल हमको तत्काल फायदा मिलता है, तत्काल फल मिलता है। हमने आग में हाथ डाला तो हमारा हाथ जलेगा, हमने पानी पिया तो प्यास बुझेगी, खाना खाया तो भूख समाप्त होगी। इसके लिए यह नहीं कि आखिरी दिन के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि नहीं आज तो आखिरी दिन जलेगा, नहीं। ये क्रियामान कर्म होते हैं। आपने आग में हाथ डाला, आपका हाथ जला। और संचित कर्म वो होते हैं
जैसे आपने बीज को बोया, उसमें एकदम फल नहीं लगता है। बीज को बोया, ऋतु आने पर फल लगेगा। तो हमारे शास्त्रों में तीन प्रकार के कर्म बताए हैं, संचित, क्रियामाण और प्रारब्ध। फिर भी भगवान कहते हैं कर्म की गति बड़ी गहन है और व्यक्ति को अगर मुक्ति पानी है तो सारे संस्कारों को दग्ध करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, आप चने को रोस्ट कर दो और उसको जमीन में डालो तो वो उगेगा नहीं। रोस्टेड सीड्स डोंट ग्रो। ऐसे ही हम जब कर्म के संस्कारों को दग्ध कर देते हैं तो हमारा जो पुनर्जन्म है, आना जाना, ये समाप्त हो जाता है। इसलिए हम भक्ति को अपनाएं। हनुमान जी ने प्रभु राम की भक्ति की और जीवन को सफल बनाया। कहो कहां लग नाम बढ़ाई। तुलसीदास जी कहते हैं मैं नाम का बखान कहां तक करूं। कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान राम स्वयं उस नाम का बखान नहीं करते हैं। और तुलसीदास जी बड़ी सुंदर एनालॉजी देते हैं, राम एक तापस त्रियतारी। भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार कर दिया, अहिल्या का स्पर्श किया, अहिल्या नारी बन गई, अहिल्या का उद्धार कर दिया। राम एक तापस त्रियतारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। और नाम ने हजारों कुबुद्धियों का सुधार कर दिया। राम भालू कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम कीनन थोरा। नाम ले तो भव सिंधु सुकाही, करो विचार सुजन मन माही। भगवान राम ने भालू बंदरों को बटोरा, श्वेत बंद रामेश्वर पुल बनाया। पर तुलसीदास जी कहते हैं नाम ले तो भव सिंधु सुकाही। अगर आप नाम का सहारा लोगे तो भवसागर ही सूख जाएगा। करो विचार सुजन मन माही, फिर आपको ब्रिज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नाम का वो प्रभाव है कि नाम का प्रभाव आपके जीवन को बदल सकता है। नाम का प्रभाव आपके जीवन को सुखमय बना सकता है। नाम का प्रभाव आपके जीवन को आनंद दे सकता है। नाम का प्रभाव आपके जीवन को मोक्ष दे सकता है। नाम का प्रभाव आपके जीवन में कैवल्य पद प्राप्त करा सकता है। यह है नाम का प्रभाव। इसीलिए कहा कितने राम हैं? कहा राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। राम का मतलब जो रमण करता, राम रमयन्ते योगिन, जो सबके हृदय के अंदर रमण कर रहा है वो राम है। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां राम ना हो। राम सब जगह है। तो राम जिसका नाम सब जगह है, जिसके लिए नाम के लिए कहा गया कहो कहा लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। हनुमान जी ने नाम का सुमरण किया और राम को भी अपने वशीभूत कर लिया। नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूजित नाम प्रभाव। गणेश जी ने नाम के प्रभाव को जाना और उनकी पहली पूजा नाम के प्रभाव से होती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं, हमसे पूछते हैं कि आप हाथी की पूजा करते हैं, ये हाथी का सर है और ये शरीर आदमी का है, ये कैसा देवता है? हमने कहा इसकी एक कथा आती है और कथा यह है कि जब माता पार्वती गौरी कुंड में स्नान कर रही थी तो उन्होंने अपने मानसिक शक्ति से गणेश की रचना की और अपना पुत्र बना के कहा, बेटा यहां किसी को आने मत देना, मैं स्नान कर रही हूं। गणेश खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद भगवान शंकर आए। भगवान शंकर ने देखा कि भाई ये कौन खड़ा है। गणपति ने रोका कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो, माता स्नान कर रही हैं।
तो शंकर जी ने कहा मेरे घर में मुझे रोकता है। तो लड़ाई हुई और शंकर भगवान ने गणेश जी का सिर छेदन कर दिया, सिर काट दिया। अब सिर कट गया, अंदर पहुंचे, लहूलुहान थे। पार्वती ने कहा ये खून कैसा? बोला एक लड़का मुझको रोक रहा था, मैंने सर काट दिया, शंकर भगवान ने कहा। तो पार्वती ने कहा वो तो मेरा बेटा था, आपने मेरे बेटे को मार दिया। पार्वती क्रंदन करने लगी और कहा मेरे बेटे को जीवित करो, नहीं तो सारे संसार को मैं नष्ट भ्रष्ट कर दूंगी। तब भगवान विष्णु आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, सबने कहा भाई कैसे जीवित करोगे? तो ढूंढा गया कि जिस समय गणेश का जन्म हुआ था उस समय किसका जन्म हुआ? तो एक हाथी का जन्म हुआ था और तब हाथी के सर को लेकर लगाया गया। तो मैंने कहा भाई देखो एक छोटी सी बात है, आज आदमी हार्ट ट्रांसप्लांट करता है। आज साइंस इतनी विकसित हो गई कि हम कहते हैं जी हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, आपका दिल बदल सकते हैं। आज साइंस इतनी विकसित हो गई कि आपके बाल नहीं है, आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। वी कैन पुट दी हेयर्स। आपके दांत नहीं चलेंगे तो हम डेंचर प्लांट कर सकते हैं, दांत हम लगा सकते हैं। तो उस जमाने में यह सोचा गया कि हम सर लगाएंगे, हेड ट्रांसप्लांट करेंगे। कितनी बड़ी साइंस होगी, सोचने की बात है। आज इतनी साइंस के बाद वी कैनॉट डू हेड ट्रांसप्लांट, हम सर को नहीं लगा सकते, कोई साइंस नहीं है। पर यह सोचा गया और हाथी का सर लगा करके गणेश को जीवित किया गया। तो कहने का मतलब यह एक सोचने की, विज्ञान की शक्ति के बारे में है। अब हाथी क्या करता है? एक शिक्षा देता है। हाथी सूंड से पानी पीता है। पानी पीना कर्म इंद्रिय का विषय है, वर्किंग ऑर्गन का विषय है। हाथी सूंड से सूंघता भी है, सूंघना जो है ज्ञान इंद्रिय का विषय है। अगर हम ज्ञान और कर्म का समन्वय कर लेंगे तो हमारे विघ्न ही नहीं रहेंगे। और इसीलिए गणेश महाराज को कहते हैं विघ्न विनाशक, विघ्नों को दूर करने वाला। सबसे पहले पूजा इसलिए की जाती है, ओ लॉर्ड वी शुड हैव नो ऑब्स्टिकल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होने चाहिए। ज्ञान और कर्म का समन्वय यह बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा आप जब कोई मशीन खरीदते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शन बुकलेट आती है जो बताती है भाई ऐसा ऐसा करो। वो नॉलेज भी देती है और आपसे कहती है मशीन को ऐसा खोलो, ऐसे लगाओ, ऐसा करो, ऐसा करो। तो ज्ञान और कर्म का जब समन्वय होता है देन द मशीन फंक्शंस, मशीन काम करने लगती है। ठीक इसी प्रकार से आप गाड़ी है तो गाड़ी को चलाना आना चाहिए, ज्ञान और कर्म का समन्वय होना चाहिए। तो गणेश महाराज के अंदर ज्ञान का, कर्म का समन्वय है, इसलिए वो हमारे विघ्न विनाशक हैं। और नाम प्रभाव जान गणराऊ, प्रथम पूजित नाम प्रभाव। गणेश महाराज ने नाम के प्रभाव को जाना। जब यह हुआ कि संसार के अंदर लोग दौड़ करके आएंगे, संसार की परिक्रमा करके आएंगे, तो कार्तिकेय स्वामी अपने मोर पर बैठे चल दिए। गणेश महाराज ने सोचा कि संसार की परिक्रमा करनी है, मैं चूहे पे बैठ के कैसे करूंगा? तो उन्होंने ध्यान किया और ध्यान से उनको पता लगा कि शिव और पार्वती तो संसार के केंद्र हैं, संसार के पोल हैं। और गणेश महाराज ने शिव और पार्वती की परिक्रमा करके कहा कि माता मैंने आपकी संसार की परिक्रमा कर ली। बिकॉज इफ यू गो अराउंड नॉर्थ पोल इट टेक्स अ वेरी शॉर्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो फिर गणेश ने नाम के प्रभाव को जाना, तो ये ज्ञान का प्रभाव है। उसी नाम को जान करके हम भी अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और नाम को जानने के लिए गुरु महाराज की जरूरत होती है। गुरु ज्ञान देते हैं तो कहा गु नाम अंधकार होता है, रू नाम प्रकाश होता है। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, ये सत्संग का हमें लाभ मिला और यहां से प्रेरणा लेकर के हमने अपने जीवन को सफल बनाना है। क्योंकि कहा है मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। हमारे संतों ने कहा
ज्ञानंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। श्री गुरुदेव नानक जी कहते हैं कि गुरु महाराज ने ज्ञान का काजल दिया, ज्ञानंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, और अंधकार का विनाश कर दिया। अंधकार का विनाश कैसे होगा? प्रकाश से होगा। अंधकार काटा नहीं जाता, मारा नहीं जाता, प्रकाश किया जाता है। और हरि कृपा ते संत भेटिया, जब भगवान की अनुकंपा होती है तो संतों से मुलाकात होती है, संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। और नानक मन प्रकाश, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मन में प्रकाश हो जाता है। तो गुरु महाराज की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाएं, यही संदेश हम लोग आपको देना चाहते हैं। एंड माई ब्लेसिंग्स टू ऑल द प्रेमीज। मैनी प्रेमीज हैव कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अर्जेंटीना, महीको and Australia, Fiji, so many places, Canada. So my blessings to all the premies, and let us make a firm commitment to make a Satsang hall in Ohio so that we get this beautiful opportunity in our own ashram. And once we have a big hall, definitely we'll come again and again, and you will have similar Satsang. And I was very happy to see all the people dancing here. और मैं और भी बधाई देना चाहता हूं कि हमारे भारत के अंदर हमारी नई पार्लियामेंट बनी है। इट्स अ फैंटास्टिक बिल्डिंग, ए न्यू बिल्डिंग दैट वी हैव गॉट। और मैं सबको नई पार्लियामेंट की बधाई देता हूं। और निश्चित रूप में नई पार्लियामेंट के अंदर जो सिनोगॉल लगाया गया, धर्म दंड लगाया गया है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम धर्म दंड को समझें और धर्म के रास्ते पर चलें। धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म की रक्षा जो है वो बहुत बड़ी चीज है। जब लक्ष्मण जी जाते हैं और लंका को देखते हैं, लंका सोने की थी, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु हम अयोध्या जाके क्या करेंगे? ये सोने की लंका कितनी दैदीप्यमान है, कितनी प्रकाशवान है, कितनी सुंदर है। इट्स ऑल मेड ऑफ गोल्ड। तो भगवान राम कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका न लक्ष्मण रोचते, जगत जननी भूमिष्ठ स्वर्गादपि करियसी, कि जो अपनी मां होती है वो तो स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है। तो जगत जननी भूमिष्ठ स्वर्गादपि करियसी। तो निश्चित रूप में उस भावना के साथ हम लोग, भगवान ने जो कहा तो उसकी भावना के साथ हम आगे बढ़ें। और निश्चित रूप में जिस ज्ञान को देने के लिए महापुरुष आए, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, महान पुरुष आए, संत ज्ञानेश्वर आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, गुरु नानक देव जी आए जिन्होंने ज्ञान का प्रचार किया, उस ज्ञान को जीवन में प्राप्त करें। उनमें कोई मतभेद नहीं था, इंपीरिकल एक होता है। आप पानी को कहीं से भी ले आइए, किसी भी नदी का पानी ले आइए, पानी को एग्जामिन करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा। तो पानी में भेद नहीं होता, हमारे शब्दों में भेद है। इसलिए जो इंपीरिकल जो एसेंस है उसको हम समझ के उसको जीवन में उतारें तो हमारा कल्याण होगा। इसके साथ साथ हम गंगा को मानते हैं, गंगा सबको पवित्र करती है। गंगा तो धरती की नदी नहीं थी, स्वर्ग में बहती थी। और भगीरथ ने तपस्या की, अपने पुरखों का उद्धार करने के लिए स्वर्ग की धारा को धरती पर लाया। गंगा का मतलब ही है कि तपस्या करोगे तो स्वर्ग को धरती पर ला सकते हो। अगर हम तपस्या करेंगे, भजन करेंगे तो हम स्वर्ग को धरती पर ला सकते हैं। यह गंगा का संदेश है। गंगा किसी से किसी की जात नहीं पूछती है, गंगा प्यासे की प्यास को बुझाती है। तो आइए इसी भावना के साथ समाज का हम उद्धार करें, समाज का कल्याण करें, समाज की सेवा करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।